Hi guys, Tanya here from Resin India and I welcome you on our YouTube channel. So basically आज मैं आपके साथ एक बिजनेस आइडिया शेयर करने वाली हूँ जहाँ बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ गुड अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर सकते हैं। आप इस तरह के टी लाइट्स, की चेन्स एंड मेनी मोर थिंग्स बना के अपने लोकल स्टोर्स पे ऑनलाइन सेलिंग करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। सो टुडे आई विल शो यू कि आप ये पीसेस कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज मोल्ड, रेजिन एंड सम पिगमेंट्स। सो फ्रॉम दिस मोल्ड वी कास्ट दिस पीस, from this mold we make this piece, from this mold this one, and from this. Today I'm gonna explain you very deeply that from mold how can you cast these pieces. Let's start the work. So today I'm gonna do a full tutorial that how from this mold you can create exact piece like this. So let's start. So firstly you will need a weight machine because the resin go according to the weight. Then some glasses to mix it, sticks to mix it well, and some pigments and nothing else. Let's do this. So first of all, for these we are gonna take some resin and some hardener, and to create an epoxy first we will take hardener. I'm taking 10 grams of hardener. Okay, it's 11 but it's okay. In 10 grams of hardener we will mix 30 grams of resin as our ratio is 3:1. Okay, 0 and then 30. Slowly. Okay, done. With the help of silicone stick, we will mix it well. Okay, I think it's mixed well. Now we will take this small cup and हम थोड़ा सा रेजिन इस कप के अंदर डाल देंगे, like थोड़ा सा. Okay, मतलब मैंने हाफ क्वांटिटी को इसके अंदर डाल दिया है. In this we will mix, like मैंने लास्ट टाइम गोल्ड फ्लेक के हिसाब से बनाया था. Today I am taking copper flakes. ये हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है और आपको अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन DM me on our Instagram handle. MT Resin Arts India is our Instagram handle name. Like हमने कॉपर फ्लेक्स को इसके अंदर डाल दिया. Now with the help of this silicone stick हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे. Like you can see, हम जैसे जैसे इसको मिक्स करेंगे ना ये और छोटी छोटी टूटती जाएगी and it will look very good. Yeah, after mixing it we will pour this in our mold like this. आराम से, like हम लोग हाफ रखने वाले हैं ना. Wait a second, I will guide you well. मिक्स करने के बाद हमने इस रेजिन को मोल्ड में पॉर कर दिया. Okay, like you guys can see, please throw this in the spoon. Always wear the mask while working with the resin. Like see, इसमें हमने थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर रेजिन में गोल्ड फ्लेक डाल के एक लेयर को रेडी किया था और नीचे बेस में हमने व्हाइट कलर रखा था. इन दिस मोल्ड वी आर वर्किंग सेम
बस हमने इसमें कॉपर फ्लिक्स डाली। अब मैंने इसको हाफ फिल कर दिया है। आफ्टर 6 to 7 आवर्स ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा रेजिन, लाइक थोड़ा थोड़ा मोटा हो जाता है। उसके बाद हम इसके अंदर सेकेंड लेयर को फिट करेंगे ताकि मिले नहीं, कलर आपस में मिले नहीं। तो आई थिंक आफ्टर 6 to 7 आवर्स वी विल fill the white color in the down side, in the back side. Okay, so now you guys can see कि बहुत कम quantity में resin available है अब हमारे पास, and this is not enough to make this diya mold. So what we will do that we will make some Diwali molds like swastik, Shri, Om and Trishul one. So what we will do, this is metallic pigment. We will mix some deep brown metallic pigment in the resin cup and mix it well unless all the powder form doesn't mix well. See, I'm mixing it. Oh, wait a second. How pretty it is looking. Okay, so you guys can see how pretty it is looking, right? Okay, so after mixing it with the help of this dropper, what we will do that okay, so this dropper make our work very easy. We will fill this space with this color. As you guys can see कि हमने इस ड्रॉपर की हेल्प से इसको पूरा फिल कर दिया है। नाउ वी विल वेट फॉर 4 to 5 आवर्स। जब ये थोड़ा सा सूख जाएगा उसके बाद हम इसकी सेकेंड एंड फाइनल लेयर को रेडी करेंगे एंड देन द मोल्ड विल बी रेडी सून। सो गाइज वी आर हियर आफ्टर 3 to 4 आवर्स एंड ये अब थोड़ा सा लाइक मोटा हो चुका है। सो अब अगर हम इसमें और रेजिन डालेंगे तो वो मिक्स नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्क अगेन। So अब हम epoxy को 2 parts में divide कर लेंगे. Okay. And in this we gonna use white pearl shade available on our website www.resinartsindia.com, and then we will mix it well unless all the powder form of pigment doesn't mix well. I think ये resin मुझे थोड़ा सा कम पड़ेगा, like I can assume it. So I will mix more. Okay, I think this will be enough. Okay, so you can see how pretty it is looking. Now we will pour this in our mold. So इस मोल्ड को पूरा भरने के बाद मेरे पास रेजिन कम पड़ गया था फॉर फिलिंग दीज मोल्ड, तो मैंने 10:30 रेशो का एक और रेजिन बनाया है एंड आई एम मिक्सिंग इट नाउ. Okay, it got mixed well. So in this we're gonna use this paste pigment that is available on our website
Okay, so our work is done here. So after 16 to 18 hours, I will demold it and then our pieces are ready to sell in the market. Okay guys, so we are here after 18 to 20 hours later and like you can see, it's solid now. और इसको check करने का best तरीका है थोड़ा सा मतलब it's easily removable, right? So like now we will demold it. So guys, you can see कि बहुत ही कम मटेरियल के साथ हमने इतना प्यारा सा पीस क्रिएट किया है. You can create it in any color and आप then इसको आराम से लोकल शॉप्स पे ऑनलाइन कहीं भी इसको सेल कर सकते हैं and then you guys can earn a good amount of money.